The metals is the very important chapter. Metals, okay, and alloys. So let me tell you what is the metal. Metal is any element which can conduct electricity. Okay, it can conduct. It's an element. Okay, it's an element which can conducts electricity. Simply, we can define like this. Okay, but in fact, it has many other properties. It has some other properties. Okay, like it is the heat conductor. Secondly, it is the electricity conductor. Means it conducts electricity. Okay, it has a high melting and boiling point because of metallic bond, and even high density. Sorry, even high density. Density means mass per unit volume. Okay, it's very dense. Its particles are arranged very closed. Okay, they have much more mass per unit volume. And fourth thing is these are malleable. Malleable means when we hammer them, they convert into the sheets. And ductile. Ductile means when we draw them by the virtue of which they convert into the wires. Okay, this is called ductility. Okay, malleable and ductile. But these cannot be used widely. The question is why they cannot be used. Why pure metals cannot be used widely? Used widely in industries. Okay, in industry we cannot use them, okay, as the pure metals. The reasons are there are two reasons. First is uh, they have the atom of the same types, okay, same sizes. So when the force is applied, so they slip over each other. A pure metal can a pure metal, of course, the metal is pure. Okay, contains the atoms of same size. They have the atoms of same size. Okay, basically metal is an element, and we know that elements have the atoms of the same type of the atoms. Okay, elements have the same type of atoms which have the same atomic numbers and okay, and definitely they should have the same sizes. So when the force is applied, so they slip over each other. Okay, so it means they slide over each other. These layers slide when the force is applied. So this is the force. Okay, so what happens as a result? They slide over each other. So in this way, you can say that they are more malleable. They have more malleability. Okay, they are soft and malleable. Malleable means they have more malleability to convert into the sheets. Okay. A second thing, pure metals corrode. Corrode means they react with oxygen. Okay, that is available in air, so that's why they get rust like the as iron gets rust. So in other cases we say the corrode. Okay, so that's why we have to use some alternate way, that is the alloys. When the metal is mixed with other elements, okay, when the metal is mixing the metal. Okay, the mixing metal with other elements. Metal is mixed with other elements. Okay, those elements can be metal
and can be non-metal. So that's why I'm saying elements. Okay, so it's not necessary that those elements should be metals. Can be metal and non-metal. Okay, so here are some examples. So in this way they become stable, they don't corrode. Here are some examples of brass. brass in Urdu is known to पीतल, इसको हम पीतल कहते हैं, ठीक है. It's made up of copper plus zinc, and it's more stronger and as compared to individuals from which this it is made. So this is a mixing. This is a physical mixing. It doesn't mean that they react. Allah is a physical mixing of the metal with other elements. Okay. In the same way, we use the this pewter. Okay, pewter. So it is stronger. You can say it is for strength. For the purpose of strength, these are mixed. Okay. Why the pewter? For good appearance, to improve the appearance. For good appearance. Okay. What is the pewter made up of? It's made up of tin, antimony, and copper. Tin, antimony plus copper. Means tin we say Sn, antimony Sb. This is these symbols and copper. Okay. So for appearance, to lower the melting point, for lowering the to lower the melting point. Okay, what we use? Solder. Okay. What is solder made up of? Solder is actually made up of tin and lead. Tin and lead. Okay, so these are used for joining the electronic parts. Okay, and this next one is the that's very cupronickel. Okay, cupronickel, in which the copper and nickel both are used. Okay, so what is a is resistant to corrosion. Okay, resistant to corrosion. It doesn't corrode. So what happens when different atoms of different sizes combine? Okay, so what happens? So you can see when we have the atoms are different like this. Okay, different size. Sorry, I'm trying to make one of the larger size and other of the same size, but my drawing is not good. So you can understand that there are two types of metals. So when the force is applied, so they don't slide. Okay, they resist sliding. So due to which they get the strength. Okay, when the force is applied, they don't slide. Okay, do not slide over each other. The layers of the metals do not slide over each other because they have the different sizes. Okay, so that's why you can see that they are resistant to means they are stronger. It's for the alloys. Okay, we move to the next topic. That is the reactivity series. That was a very important reactivity series. What is the reactivity series? Actually, the reactivity series is the arrangement of the metals from the higher reactant to the least reactant. Higher reactant to least reactant. From you can say most reactant to sorry, you can say most reactant to the least reactant. How would we know that which one is the more reactant? More reactant forms cation very rapidly.
means cation means they lose electrons easily and become plus charge. Okay, so to uh, find out the reactivity of the metals, we have two methods. Okay, how can we find out the reactance? So reactivity of the metals. So we have two methods. First is reaction with cold water and steam. Okay, some react with the cold water and some with the steam. A second, reaction of the metals with the dilute hydrochloric acid. Okay, ICl. So these are two methods. So what we do? Let me tell you about the first method. Okay, means the reaction of the metal with the, okay, a reaction with the cold water plus stream. Okay, so let me tell you that what happens. Though some metals react violently even with the cold water. Okay, and some react, you can say some react slowly. Okay, you can say violently, then it becomes readily. First, actually, it is explosively. Sorry, not. Okay, with the cold water. And some do not react with the cold water, but they react with steam. So we have this table which we are going to discuss. After this, you will get idea about it. Okay. Uh, yes, here we go. How it happens? Let me tell you what is the experiment. How can we do this experiment? Actually, in the lab, there is test tube like this. Okay, so here is a one. You can say this is one type of stopper, and okay, here is pipe fitted to the, okay, to the this, so you can say tub shape. Okay, and it contains water. Actually, here we have, uh, you can say, we have over here soaked in water, that wool. We have wool soaked in water, and here we have metals which we heat so that it will react with the water. And the gas produced over here, we get it collected by displacement, means by displacement. We know that hydrogen is insoluble in water, so we get it by displacement method. Okay. Okay. So this is water. So let's do it. What is the conclusion of this? We have the metal. Okay, we have different metals. They have reaction with the cold water. Plus observation, you will observe what happens. Then reaction with the steam. Let me tell you that first what would take potassium, K, potassium. Okay, it reacts violently. Okay, and it forms a hydroxide, and then hydrogen gas is produced. Okay, uh, in this way the heat is enough heat is produced, and in this way it catches the fire. It catches the fire. So what happens? We take 2K plus 2H2O, so we get 2KOH2 plus H2, and a lot of heat is released, and it catches the fire. Okay. Now let's move to the sodium. Okay, we have sodium. So it reacts also violently. Yeah, it reacts very violently,
and with the cold water. It only reacts voluntarily. Now the intensity is decreasing. You can see it. As the reactivity is decreasing, so very voluntarily too, it's coming towards the voluntarily. Okay. Okay. It also may catch fire. Okay, and explode. Okay. So let's see the same reaction 2Na plus 2H2O give rise to 2NaOH. Sodium hydroxide is formed. Okay, and then hydrogen gas is released. When this is aqueous. Okay. Then third reaction, that is with the calcium. Okay, so it reacts readily. Just now you can see that is readily, it reacts readily. Okay, and in the same way, hydrogen is produced. Calcium reacts with a 2H2O, give rise to CaOH twice plus H2. Okay, but you can see in this case what happens when it reacts with the steam. It reacts explosively. Explosively मतलब धमाका होता है इसमें. Explosively. यहाँ भी यही होता है और यहाँ पे भी यही होता है. ठीक है, explosively इसमें होता है. So you can see next what happens with the magnesium. Magnesium हम ज़रा लेते हैं तो magnesium के साथ क्या होगा? Magnesium जो है ना वो reacts very slowly with the cold water. Very slowly with the cold water, but it's possible that how it reacts. We can see that Mg reacts with the H2H2O. Okay, and you will see that magnesium hydroxide is from MgOH twice plus hydrogen gas is released, but it is very slow. Okay, but when it reacts with the steam, magnesium is allowed to react with the steam. It reacts violently. It reacts violently. So you will see that magnesium and it reacts violently with the steam. So remember that whenever anything reacts violently with the steam, so it doesn't form hydroxide, it forms magnesium oxide. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. And then hydrogen. Next we are going to study about the zinc. Zinc reacts, no reaction occurs over here. Iron also doesn't react, no reaction. Okay, and you will see that there are three which are called noble metals like lead, iron is Fe. Okay, so lead, copper, silver, they also show no reaction. Okay, and even they show no reaction with the steam. So it shows that they are very least reactive. Okay, hard zinc reacts. Hard zinc reacts means here we have to provide heat. Means here only steam. Hard zinc when we take, then there is steam, then it reacts. Okay, uh, readily. Okay, you will see that zinc plus H2O, the same reaction will happen. ZNO plus H2 gas. Okay, the same is here. Hot iron reacts slowly with the steam. We have hot iron. Here is reacting hard zinc with the steam readily. Here we don't need to heat the magnesium. Only if we have the steam, then it reacts voluntarily. Intensity is decreasing. Here we have to use the hard iron. Okay, so when it is allowed to react with the steam, so what happens? You'll see that it reacts slowly. It means intensity is decreasing. For H2O, so it give rise to Fe3O4. This is a type of oxide. Okay, solid and plus 4H2. Yes. So what it shows, in the same way we can react with the reaction with the dilute ICl. So इसके साथ भी reaction हम करा सकते हैं. We know that this is the acid. So when the metal is allowed to react with the acid, so metal chloride will be formed with the hydrogen.
If it is magnesium, we take it 2, we take MgCl2 like this. Okay. So what happens when we react? And let's see. यहाँ पे मैंने मेटल ले लिया है, ठीक है, जो मेटल है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम अलाउ करते हैं रिएक्ट करें किसी से ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे यानी कि ऑब्जर्वेशन प्लस रिएक्शन विद ICl, ठीक है। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। वही हमारे पास फिनोमेना है, वही प्रोसेस है, वही स्टेप्स हैं कि हम इसमें जो लेते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले हम ना वही पोटासियम लेते हैं कि जब इसको हम रिएक्ट करते हैं तो ये एक्सप्लोजिवली रिएक्ट एक्सप्लोजिवली, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा 2K प्लस 2HCl ये राइज टू 2KCl प्लस H2। चलो इक्वेशन यहाँ मैंने लिख दिया, इट हैड टू बी हियर। ओके, it reacts very explosively. It should not be done in the lab, not to be done in the lab, अवॉइड इट। ओके, उसके बाद सोडियम है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्ट्स वोलेंटली। ये एक्सप्लोसिवली का मतलब क्या होता है, धमाके के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, वोलेंटली। ठीक है, 2Na प्लस H2O 2NaOH, सॉरी दिस इज नॉट H2O, दिस इज HCl। ओके, टू NaCl प्लस H2, तो इसमें वही होता है, वोलेंटली हो गया। आगे हम ज़रा देखते हैं तो कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या होता है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन जो होता है ना वो रैपिडली होता है, ठीक है। और आगे आप देखेंगे किसके साथ जी, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन क्या होता है इसका, ये भी रैपिडली होता है, ठीक है। आगे जिंक के साथ मॉडरेटली, इंटेंसिटी आस्ता आस्ता डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स bottom. The reason is because they are going to become least reactive, so that's the intensity of the reaction with the ICl is decreasing. So when the iron is allowed to react, so react slowly, okay, and lead, silver, and next what we call copper, no reaction. Okay, you can see the equations. कैल्शियम है तो हम इसका रिएक्शन कराते हैं प्लस 2HCl, we'll see that CaCl2 will be formed plus with hydrogen, and when magnesium is allowed to react with the 2HCl, this is aqueous and this is the solids. Okay, I'm not writing the state symbols because you understand that time is very short. Okay, you can understand. And the next is zinc. Zinc reacts with the HCl. Okay, so you will see that ZnCl2 is formed plus H2. Okay, next iron, Fe, and it is allowed to react with the HCl, so FeCl2 is formed with the hydrogen. Okay, and they do not react. So what we come to the conclusion. What is the conclusion? Conclusion is that most reactive is potassium, then sodium, then calcium, magnesium, okay, zinc, iron, lead, copper, sorry, here is hydrogen, but that is non-metal, okay, copper, silver, okay. So all these things are showing that it's decreasing. It's most reactive to, you can say reactivity is decreasing. Most reactive, least reactive. You can say this is a pattern, reactivity decreases. Okay. So how can we memorize this reactivity? This is a reactivity series. Okay. तो पोटासियम को कहते हैं प्लीज, ठीक है, दिस इज नोमेनिक्स। सोडियम को कहते हैं सैंडो, कैमल्स, ओके, मंकीज, zebra, in,
large lead, heavy hydrogen, creates copper, soon silver. सो यू कैन सी प्लीज़ का मतलब है सॉरी पोटासियम, सेंट का मतलब है सोडियम, कैमस का मतलब है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का मतलब है जेबरा जिंको, इन का आयरन, लार्ज पीवी लेड, हैवी हाइड्रोजन दिस इज नॉन मेटल, क्रेट्स कॉपर एंड सून एज। गोल्ड आल्सो एग्जिस्ट ओवर हेयर, गोल्ड भी इस तरह नॉन नॉन रिएक्टिव होता है, it's not given over here but you can understand that no, gold is also non-reactive because it can exist independently, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता ना इसलिए अलोन पाया जाता है। Okay, so most reactive has tendency to lose the more electrons as compared to least reactive. So suppose you have potassium, so it will become K plus with the release of electron, but it will happen very quickly. But if you have magnesium, it will also convert into Mg plus 2, but it will take time. So it is more reactive, okay, and it is this reactive. Okay, so what we have to do, हम देखते हैं कि displacement reaction of the metals. Displacement of metals. A more reactive metal, you have to understand this. A more reactive जो मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को निकाल देती है, कैन डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव metal from its salt solution, from its salt solution. How it happens, let me tell you. हमारे पास ना यहाँ पे है blues, ठीक है, then we make it blue. This is copper sulfate. Okay, then you put the iron fillings into it. Means powder. Iron filling means powder की form. You will see that its color changes to light green. तो असल में क्या हुआ कि आयरन कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, और नीचे ना कुछ रेडिश ब्राउन, कॉपर रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन ये कॉपर ये नीचे बैठ गई, ठीक है. सो दिस इज़ द कॉपर, सॉलिड कॉपर. तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दिस आयरन Fe. असल वो ये है कि कॉपर सल्फेट जो है ना, ये एक्वस इसका सोल्यूशन है, इसका ब्लू कलर है, इसका नाम ने आयरन डाली जो कि सॉलिड है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में थी. तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसने कॉपर को क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, ओके, इसको डिस्प्लेस कर दिया. तो जब इसको डिस्प्लेस कर दिया तो आप देखेंगे इस क्या होता है, FeSO4 प्लस कॉपर प्रोड्यूस होगी. तो इसका ये एक्वस है, तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन. और कॉपर जो है ना ये सॉलिड बन गई, और इसका कलर क्या होता है, इसका होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन लाइक दिस, ओके, एज द कलर ऑफ, ठीक है, ये सॉलिड होगी. इसी तरह हम इसकी कुछ और देख सकते हैं कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अच्छा, ये आप एक मेटल के ऑक्साइड ले लें और एक को मेटल ले लें, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ, रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द ऑक्साइड ऑफ अनदर मेटल, मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड. ये अगर मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव, तो इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है. इफ इट इज मोर रिएक्टिव देन इट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगी, डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल.
ठीक है। और इसको हम रिडक्शन कहते हैं कि इसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और ख़ुद उसके साथ ऑक्साइड ऑक्साइड बना देगी, खुद उसके साथ क्या बना देगी, ऑक्साइड बना देगी, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम को हम ज़रा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम है ना, उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम पता है ना, ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, नीचे वाली मेटल्स को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। हाउ दे रिड्यूस, ज़रा देख लेते हैं। MgO हो गया और साथ कॉपर बन गई, ठीक है। ये सॉलिड बनेगा, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। लेकिन बात समझने वाली इसमें क्या है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ +2 है, तो इसकी तो खुद क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो +2 से इसकी यहाँ पे 0 है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी रिडक्शन होगी, तो ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गर मेटल, स्ट्रॉन्गर यू कैन से मोर रिएक्टिव मेटल इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट, मोर रिएक्टिव मेटल इज a more reducing agent, ठीक है। रिड्यूस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इस तरह आप जिंक ले लें, जिंक है और साथ आप कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो सेम थिंग विल हैपन कि आप देखो कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगी और साथ कॉपर अलग हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। और एक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है। कुछ को हम कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन, कार्बन जो है ना कुछ को डिस्प्लेस कर सकती हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो कि लेट मी टेल यू कि जो मैग्नीशियम से बिलो आते हैं, यानी कि मैं ज़रा लिखता हूँ, प्लीज सैंडो, कैमल्स, मंकीज के, ज़ेब्रा, एनो, लार्ज करेट सून। तो जो मैग्नीशियम से लोअर आते हैं ना, इसको कार्बन डिस्प्लेस कर सकते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं, दीज आर रिड्यूस बाय द कार्बन, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले इनके अगर ऑक्साइड आ जाते हैं ना, ठीक है, तो ये एक दूसरों को रिड्यूस जो मुश्किल है, ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस से फिर क्या होते हैं, इनकी प्योरिफिकेशन होती है। वी कैन गेट द प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कार्बन जो है ना, जिंक को बहुत मुश्किल से करेगी, लेकिन आयरन को उससे आसान करेगी, लेड को और आसानी से, कॉपर को और आसानी से, बिकॉज एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह जो मेटल्स हैं ना वो यानी कि इसको ऊपर वाले जो नीचे वाले को बहुत आसानी से करेगी, ठीक है, डिस्प्लेस करेगी। तो और इस तरह हमारे पास जो इन हैवी करेट सून हाइड्रोजन यहाँ पे आती है ना, तो ये कॉपर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड को भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। कॉपर तो कार्बन तो सबको कर सकती है ना, हाइड्रोजन इन दोनों को भी कर सकती है, ठीक है। और ऊपर वाले जो होते हैं इसके ऑक्साइड, इसको हम नहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो अगर आप जिंक ऑक्साइड लिखते हैं और साथ कार्बन लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ जिंक बन जाएगी, बट इट विल बी वेरी हार्ड। लेकिन अगर आप कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, या लेड ऑक्साइड लेते हैं, तो उसके साथ इट विल बी ईजियर, ओके। कार्बन ऑक्साइड और साथ क्या हो गया, जिंक हो, सॉरी कॉपर हो गया। So when we have copper oxide, we take hydrogen gas, so it can also reduce it because it is more reactive, okay. So what will happen, H2O will be formed and the copper will be formed, okay. If we have AgO, it reacts with the hydrogen to form H2O और साथ Ag बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोर रिएक्टिव मेटल इज द मोर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। अच्छा, आगे हम कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट्स CO3 जो होते हैं, वो आपके पास पोटेशियम K2CO3 होते हैं, Na2CO3 है, प्लीसेंट, कैमल्स CaCO3 है, मंकीज MgCO3 है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ज़ेब्राज जिंक कार्बोनेट है,
इन आयरन कार्बोनेट है Fe2CO3, ठीक है। उसके बाद क्या जी, इन लार्ज लेड कार्बोनेट्स हैं, हैवी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को छोड़ दें, क्रेट्स कापर कार्बोनेट्स हैं, और फिर आपके पास सून Ag2CO3, याद रखिएगा। ये दोनों तो बिल्कुल ना स्टेबल टू हीट है, स्टेबल या रेजिस्टेंट टू हीट है, इसको बेशक आप हीटअप करते रहेंगे डिकम्पोज नहीं होते। ये जो यहाँ तक है ना, ठीक है, इनको आप हीटअप करोगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स। ये क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलें ऊपर से नीचे आएंगे ना, जो जितनी हीट हमें कैल्शियम कार्बोनेट को देनी पड़ेगी एज, ठीक है, तो इतनी ही हमें जिंक को नहीं देनी पड़ेगी। हीट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ठीक है। डिकम्पोजिंग कार्बोनेट्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इज बिकम ईजियर। ईजी। तो ज़रा आप देखें FeCO3 है, तो व्हाट विल हैपन, FeO बन जाएगा आयरन ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, इस केस में इसमें मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये तो स्टेबल है। इसमें केस में क्या होता है, आपके पास वही बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो मज़ीद अनस्टेबल होता है और आगे सिल्वर बन जाती है। सपोज लेट मी टेल यू, जैसे कि Ag2CO3 है, इट विल फॉर्म Ag2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं ज़रा 2Ag2 लेता हूँ O, तो ये फर्दर 4Ag बन जाएगी और साथ क्या बन जाएगा, O2 बनेगी। इट मीन्स कि सिल्वर ऑक्साइड फर्दर अनस्टेबल होती है और सिल्वर बना देती है और साथ क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोनेट्स। सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन। हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स को बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर वी कैन गिव देम पोजीशन। इफ यू हैव अनफेमिलियर मेटल्स, मीन्स यू डोंट नो वेयर शुड बी द प्लेस ऑफ दैट मेटल, तो आप उसको रिएक्ट कराएं। रिएक्ट कराने से आप उसको पोजीशन दे सकते हो। पोजीशन यू कैन गिव बाय द रिएक्शन, यू कैन गिव द पोजीशन टू द अनफेमिलियर मेटल्स। you're not familiar with any metal, so by its reactivity you can give its position। मुख्तलिफ मेटल्स हैं आपके पास, एक्स वाई जी, बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको आप रिएक्शन कराएं, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको टॉप करें, उससे कम है तो उसको नीचे रखें, उससे कम है उससे नीचे रखें, पहले से भी ज़्यादा है तो उसको ऊपर रखें। सो बाय अरेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी यू कैन अरेंज देम, ठीक है। और इन दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ मेटल्स, यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर of metals by using the reactivity series, okay। This is all about the reactivity series. In next lecture we'll study the extraction of metals, okay।